है हमारा। अब इसमें आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले एक बार ग्राफ करते हैं। Now this is a bar graph, so how do we have to actually use the template in describing this kind of image? Okay, you don't have to do anything, सिर्फ आपको क्वेश्चन जो भी टेम्पलेट है उसको यूज करके जो भी चीजें आपको दिख रही है वो सारी चीजें यहाँ पे बोलनी है. Just let me make it a bit smaller. Yeah. Okay. Alright, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दो कीवर्ड्स आएंगे. द गिवन इमेज, whatever the kind of picture do you think it is. Okay, this is a bar graph for example. तो इसमें सबसे पहले आपको बोलना है ये बार ग्राफ है और इसका टॉपिक क्या है. For example, the given image is a bar graph which illustrates, or if you can't pronounce illustrates, which gives information about mean salary of first degree graduates by gender. Just a minute, guys. Yeah, okay. I'm really sorry about that. Okay, फिर से start करते हैं. The given image is a bar graph which illustrates mean salary of first degree graduates by gender for women and men. Okay, ये आपका, if you want to speak, you can say that. Otherwise, just leave that part. उसके बाद, it can be clearly seen that the image has an x-axis and a y-axis. Okay, this is your first detailing. उसके बाद, the image not only shows different years but also shows different salaries. Okay, the third detailing, it can be also seen that the image has years like 2009 till the year 2013 and some salaries like 18,000, 19,000 till 22,000. The last one, the last description detailing is the highest salary is for men, which is in the year 2013 around 21,000, and the lowest is for women in the year 2011, which is around 19,000. Overall, the overall the image is quite informative about mean salary of first degree graduates by gender. Okay. अब इसमें वो हमारी डेटा एनालिसिस स्किल चेक नहीं कर रहे हैं. अगर आप हाईएस्ट सैलरी को 20,000 भी बोल रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मेक श्योर कि आप बीच में फंबल ना करो. अगर आप ईयर बोल रहे हो, हाईएस्ट जो था हमारा 2009 में था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. जस्ट मेक श्योर कि आप फ्लुएंट हो, आप बीच में अटको ना. ठीक है, वो आपका स्पीकिंग स्किल्स चेक कर रहे हैं, आप वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस है वो चेक कर रहे हैं, और आप जो जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो चेक कर रहे हैं. Okay, let's do it. I'm going to do it very slowly this time. The given image is a bar graph which illustrates mean salary of first degree graduates by gender. It can be clearly seen that the image has an x-axis and a y-axis. The image not only shows some years but also shows some salary values. It can be also seen that the image has years starting from 2008 till the year 2013 and salary starting from 18,000 till 22,000. The highest salary was attained by men in the year 2013, which is around 22,000, and for women it was in the year 2010, which is around 19,000. Overall, the image is quite informative about mean salary of first degree graduates by gender. Okay, this is how you have to speak. Different image लेते हैं, हमारी बार ग्राफ ही लेते हैं. Right. अब इसमें सबसे पहले let's do it very slowly again. The given image is a bar graph which illustrates which country have the most cat owners, share of people who own a cat in selected countries in the year 2017. It can be clearly seen that the image has an x-axis and a y-axis. The image not only shows different countries but also shows values in percentages. It can be also seen that the image has Russia, US, Argentina, Italy, and different values like 59%, 43%, and 41%. The highest percentage was in Russia, which is around 59%, and the lowest one, which is in South Korea, which is around 9%. Overall, the image is quite informative about which countries have the most cat owners in the year 2017. Okay, clear till here, Sukhdeep, Kopila?
एंड हर्षप्रीत? Yeah. ठीक है, एक क्वेश्चन डिफरेंट इमेज लेते हैं, लाइन ग्राफ। अब हमारा जो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ होता है ना, वो हमारा काफी सेम होता है, ठीक है। उसमें भी हमें सेम वही चीजें बोलनी है जैसे हम बार ग्राफ में बोलते हैं, बस बार ग्राफ की जगह हमें बोलना है लाइन ग्राफ, जिसमें ऐसे लाइन डिपिक्ट्स होती है ना, वो हमारा लाइन ग्राफ होता है। बार ग्राफ में हमें बार्स, ऐसे बार दिखते हैं, ठीक है। वो किसी भी लाइन में हो सकता है, एक्स पे हो सकते हैं या फिर वाई एक्सिस पे हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली एक्स एक्सिस पे है और ये लाइन है, सो दिस इज अ लाइन ग्राफ। So how will we describe this? The given image is a line graph which illustrates collapse of Atlantic codstock east coast of Newfoundland in the year 1992. It can be clearly seen that the image has an x-axis and a y-axis. The image not only shows fish landings in tons but also shows some years. It can be also seen that the image has some years starting from 1850 till 2010 and some fish landings in tons starting from 100,000 till 900,000. The highest value is for 800,000 in the year 1970 and the lowest one is for 1992, which is around 300,000. Overall, the image is quite informative about the collapse of Atlantic cod stocks. Okay, आपका जो ये रिस्पॉन्स रहेगा अराउंड 35 सेकेंड्स रहेगा। 35 अगर थोड़ा ज्यादा होता है 36 या 37, दैट्स फाइन, बट मेक श्योर वो 40 को सरपास ना करे, क्योंकि कभी कभी अगर 40 को सरपास करता है तो वी कैन बी पीनलाइज्ड फॉर इट। Okay, so make sure that you're speaking, you will have around 40 seconds, you're speaking for around 35 seconds. That's more than enough. Okay, एक और क्वेश्चन करते हैं लाइन ग्राफ का ही। Alright, again very slowly. The given image is a line graph which illustrates the rise of the smartphone in US around adults. It can be clearly seen that the image has an x-axis and a y-axis. The image not only shows some years but also shows some values like 80 and 60. It can be also seen that the image has different years like 2005, 2010, 2015 and different values starting from 20 to 80. The highest value is for 80, which is in 2020 for any small phone, and the lowest value is for 60 in the year 2005, which is for smartphone. Overall, the image is quite informative about the rise of the smartphone. अब इसमें दो लाइंस दी हुई थी, तो इसीलिए यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। क्या अगर आप चाहो तो सिर्फ इसका बोल सकते हो या फिर इसका या फिर दोनों का मिला के। द मेन थिंग हियर इज दैट यू डोंट फंबल इन द मिडल। ओके, अगर आपके पास दो लाइंस भी आ रही हैं, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 80 है 2020 में एंड लोएस्ट वैल्यू इसकी इतनी है 2010 में। ओके, दैट्स इट। या फिर आप बोलो दो लाइन है जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, एक रिप्रेजेंट कर रही है एनी सेलफोन को और एक रिप्रेजेंट कर रही है स्मार्टफोन्स को। ओके, let's take a different picture. Let's try using the same template. Sudeep, you want to try with this picture? Yeah. Very slowly. Yeah. The given image is a line graph which illustrates library visits annually. It can be clearly seen that image has x-axis and the y-axis. The image not only shows the years but also the values in millions. It also shows years from 2015 to 2020 and values from 5 to 5.6. The highest value is in 2020, which is 5.6, and the lowest value is in 2015, which is only 5. Overall, the image is very informative about annual library visit. Perfect. Very good. Well done, Sudeep. ये एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इस तरीके से बोलोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अपने डिस्क्राइब इमेज में। दिस इज योर एक्सटेंडेड स्पीकिंग टास्क। अगर आप सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करोगे डिस्क्राइब इमेज के एंड आल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द टास्क जो मैं भी आपको बताऊंगी, एंड you can get full marks in your speaking. Okay, that was absolutely perfect. Harshpreet, Kopila, आपको समझ में आया जैसे सुखदीप ने किया? This is how you have to speak for your describe image. The template has been used and we have actually got complete 9 using the same template, using the same trick जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप इस तरीके से बोलोगे you will get full marks in your speaking. Okay. Alright, let's move on to a different picture. बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट करते हैं। अब पाई चार्ट हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसमें हम मैक्सिमम प्रोपोर्शन और मिनिमम प्रोपोर्शन बोलेंगे लास्ट में।
आपका जो टेम्पलेट मैंने दिया है उसमें आपको दिख रहा है सेम। वेट अ मिनट सुदीप, मैं आपको भी सेंड, मैं एक्चुअली यहाँ पे सेंड कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। लास्ट में हमें चेंज अकॉर्डिंग टू द पिक्चर करना है। जैसे अगर हमें कोई भी वैल्यू दिख रही है स्क्रीन पे, स्पेशली फॉर अ बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोलनी है। अगर हमें पाई चार्ट दिया है तो उसमें हमें प्रोपोर्शन के बारे में बात करनी है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन हमारा इतना है और मिनिमम प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पे इतना है। ओके, let's take this picture and let's describe this. The given image is a pie chart which illustrates market share of smart home devices. And yeah, that's it. It can be clearly seen that the image has different categories, like smart security, smart bulbs, and others. The image not only shows these categories but also shows different values like 10.0%, 5.0%, and 20.0%. It can be also seen that these categories are divided into different sections with different colors like red, blue, green, and yellow. The maximum proportion is covered by smart bulbs, which is around 30.0%, and the lowest proportion is covered by other category, which is around 10.0%. Overall, the image is quite informative about market share of smart home devices. ओके, इसमें थोड़ा हमारा चेंज होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, तो उसमें हमें बोलना है कैटेगरीज या फिर आप सेक्शंस बोल सकते हो। Elements, the key elements in this pie chart. या की एलिमेंट भी बोल सकते हो, या that's also that will be you can use definitely, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। की एलिमेंट कैटेगरी सेक्शंस, इसमें डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं और डिफरेंट वैल्यूज है। किस तरीके के सेक्शन है वो आप बोल दो, या कैटेगरीज किस तरीके की और कौन कौन से वैल्यूज है, और इसके साथ साथ डिफरेंट कलर्स है प्रोपोर्शंस के, वो आप बोल दो। एंड मैक्सिमम प्रोपोर्शन कौन सा है और मिनिमम प्रोपोर्शन कौन सा है वो बोल दो। दैट्स इट। ओके, that's how you have to speak, you have to describe your pie chart. Guys, is it clear till here? Yep. Okay. Different image करें? Shall we go on to the next one if it is clear till these three images? Actually, let's take the first one with the difficulty. Okay, this is a little difficult image. अब जब भी हमें कोई image ऐसे मिलती है, for example, जहाँ पे आपको कोई arrows दिए हुए हैं, so obviously arrows का मतलब है कोई process हो रहा है. So this you can call it a process diagram or a flow chart. Both will be correct. The given image is a flow chart which illustrates. Now यहाँ पे हमें topic नहीं दिया हुआ है. So what do you see is going on here? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, just say a word that is relevant to the picture. For example, you can say water or salt dissolved to brine, or salt bed, or pump, or brine, or tank, or chemical plant. Okay, these are the words that you have to speak. One relevant word. Okay, the given image is a process diagram or a flowchart which illustrates water going into the pump. It can be clearly seen that the image has four main stages. यहाँ पे चार main stage है इस process की. Okay, the image not only shows water going in the pump but also shows the water dissolving to brine into the salt bed. Okay, ये हमारी दो चीज हो गई। उसके बाद it can be also seen that the image has a pump, a brine tank, and the chemical plant and a salt bed. The first, अब इसमें first process हमारा क्या है? The first process is water going into the pump, and the last process is coming out from the chemical plant. Overall, the image is quite informative about water dissolving to brine in the salt bed. Okay. इस तरीके से अगर आपको पिक्चर समझ में नहीं आ रही है तब भी आपको वर्ड्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको चीजें बोलनी है. लेट्स डू इट अ लिटिल क्विकली. I will do it very slowly, but you have to understand what kind of things I'm noticing from this. The given image is a flowchart or a process diagram which illustrates water going into the pump. It can be clearly seen that the image has four main stages. The image not only shows water going into the pump, but also shows the pump dissolving to brine into the salt bed. It can be also seen that the image has a pump, brine tank, and a chemical plant. The first stage is water going into the pump and dissolving into the brine, and the last stage represents coming out from the chemical plant.
Overall, the image is quite informative about the water process and how we can solve the bed. Okay. अब यहाँ पे आपका ग्रामर बिल्कुल मैटर नहीं करता, जो जो वर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको चीजें बोलना है कॉन्फिडेंटली. कॉन्फिडेंस इज द की. अगर आप चीज सही भी नहीं बोल रहे हो बट वो रिलेटेड है, रेलेवेंट है स्क्रीन से, तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, जस्ट स्टे रेलेवेंट एंड स्पीक इट इन वन स्मूथ फ्लो. लेट्स टेक अ डिफरेंट पिक्चर. ओके, ये भी हमारा प्रोसेस डायग्राम ही है. इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या वर्ड्स है. फॉर एग्जांपल ये हमारा टाडपोल है, ये हमारा एडल्ट फ्रॉग है, ये हमारा बेबी फ्रॉग है, ये हमारे एग्स है और इसको लार्वा भी कहते हैं, और ये हमारे लीव्स है, और ये अंडर वाटर है, और ये अबव द वाटर है. ठीक है, ये कीवर्ड्स है फ्रॉम द पिक्चर दैट यू शुड नो ऑफ. The given image is a process diagram which illustrates the life cycle of a frog. It can be clearly seen that the image has 5 main stages. The image not only shows some eggs but also shows the larva and the adult frog. It can be also seen that the image has the underground picture and the picture which is above the water, with from where the frog is sitting on the leaf. The first step involves the producing of the eggs, and the last step involves the adult frog. Overall, the image is quite informative about the full life cycle of a frog. ठीक है, इस तरीके से आपको लाइफ साइकिल मोस्ट, अगर जितने भी हमारे पास प्रोसेस डायग्राम्स आते हैं, अगर वो इस तरीके से है तो वो हमारी लाइफ साइकिल बता रहे हैं. ठीक है, दीज आर द लाइफ साइकिल्स. फॉर एग्जांपल हियर इज वेल, अगर ये वाला आप देखो, दिस इज ऑल्सो लाइफ साइकिल. इसकी मेन 4 स्टेजेस है. सबसे पहले एक एडल्ट डक है, और उसके बाद बेबी डक है, एग हैच हो रहा है, और एक बीच में भी एक पिक्चर है ऑफ अ डक. Okay, so the given image is a process diagram which illustrates the life cycle of a duck. It can be clearly seen that the image has 4 main stages. The image not only shows eggs but also shows the adult duck. It can be also seen that the image has different colors and different stages where the egg is hatching and the chicken and the adult duck is shown. The first stage is the adult duck sitting with the egg, and the last stage involves the hatching of the duck and producing a new egg. Overall, the image is quite informative about the life cycle of a duck. इस तरीके से आपको बोलना है अपना process diagrams, whatever flow charts or process diagrams that you get in your described image. Okay, clear till here, guys? Next picture की तरफ चले, और any question till here? Anisha, how much is the chances of coming up a flow chart? Because I don't like flow chart at all. सी वो डिपेंड करता है, इतने ज्यादा नहीं आएंगे. आपका मेन जो होता है, व्हाट आई हैव सीन आल्सो पर्सनली, बार चार्ट जरूर आता है, पाई चार्ट भी आता है, लाइन ग्राफ आ सकता है, फ्लो चार्ट एक अराउंड आपके 5 से 6 पिक्चर्स आएंगे ना, तो एक आ सकता है आपका, ज्यादा नहीं बट एक डेफिनेटली. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. आपको मेन चीज क्या करनी है, आपको स्टेजेस के बारे में बोलना है. इतनी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या दिख रहा है, दूसरी स्टेज में क्या, आपको एग्जैक्टली नहीं बोलना है क्या चल रहा है, चीजें क्या क्या दिख रही है वो आपको बोलना है. आप बीक के बारे में बोल दो, उनकी बीक येलो कलर की है. इट कैन बी आल्सो सीन दैट द डक हैज येलो बीक एंड ग्रीन कलर फेस. ओके, एंड इन द लास्ट स्टेज इट हैज अ येलो कलर फेस. इस तरीके से बोल दो. अगर आपको पसंद नहीं है प्रोसेस डायग्राम, तो दैट्स व्हाट यू कैन डू. ठीक है, हर्षप्रीत कोपिला, आगे बढ़े. एनी हाँ जी, क्वेश्चंस? हाँ जी. ठीक है, टेबल हमारा काफी इजी होता है. टेबल में भी वही चीजें आपको बोलनी है जैसे हमारी मेन हम बार ग्राफ या लाइन चार्ट पे बोलते हैं. आई होप यू कैन सी दिस वन, इट्स नॉट टू स्मॉल फॉर यू. The given image is a table which illustrates the number of matches in different months. It can be clearly seen that the image has different months, number of matches, the wins and draws with some points. The image not only shows months like January, February, March, but also shows number of matches like 3, 4, 5, and the points starting from 4 till 9.
It can be also seen that the image has numbers of matches like 4, 3, 5, and the numbers of wins from 1, 2, 0, and 3. The highest matches that were won was in January, which is around 4, and the lowest one were one in May, which is around 1. Overall, the image is quite informative about the number of matches held in different months. Okay. Now, अब इसमें मैंने जो भी वैल्यूज बोली है वो करेक्ट नहीं थी, मतलब अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन जो थी वो करेक्ट नहीं थी, बट वो चीजें रिलेटेड थी, जो वर्ड्स थे, जो वैल्यूज थी वो करेक्ट थी, ऑल्दो मैक्सिमम और मिनिमम जो थी वो एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं, बट अगर आप इस तरीके से भी बोलोगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अगेन ये हमारा स्पीकिंग का टास्क है, दे आर नॉट चेकिंग आवर डेटा एनालिसिस स्किल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप. नाउ मैप हमारा काफी इजी होता है, बट I'm not really sure why everyone finds it very difficult. मैप को हम आप एक पाई चार्ट की तरह ही लेके चलो, इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रोपोर्शन ही बोलना होता है. अब सबसे पहले हम क्या बोलेंगे इसमें, द गिवन इमेज इज अ मैप which illustrates, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, which illustrates different countries and their agriculture types. ठीक है, उसके बाद फिर आप बोलोगे it can be clearly seen that the image has different zones or areas with different categories. The image not only shows agriculture types, rice cultivation, tea plantation, livestock farming, but also shows different countries like China, Mongolia, India, and Bangladesh. It can be also seen that the image has different color starting from red, blue, green, and white. The highest proportion or the maximum proportion is for livestock, which is in China and India, and the lowest proportion is for tree plantation, which is in Indonesia and Philippines. Overall, the image is quite informative about different agriculture type in different countries of the world. ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी हमारी मैक्सिमम प्रोपोर्शन. अगर इन केस आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक वर्ल्ड मैप दे दिया है like this one, so what will you point out from there कि यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये वर्ल्ड मैप है तो इसमें अगर कुछ भी नहीं दिया है फिर भी आपको मैन्युअली पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट हो जाती है और ये आपकी वेस्ट हो जाती है. और कंट्रीज हमें भी पता है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज आवर यूरोप, दिस इज एशिया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. ओके, तो आप ये सारी चीजें बोल दो. द गिवन इमेज is a map which illustrates the picture of a world map on a textured paper. It can be clearly seen that the image has two colors, which is blue and white. The image not only shows different countries, but also shows different zones or directions like north, east, west, and south. It can be also seen that the whole country or the whole world is covered in blue color and the rest of the proportion is covered in white color. The maximum proportion is colored in blue colored textured paper and the rest of the part is colored in white paper. Overall, the image is quite informative about the picture of a world map on a textured paper cloth. Okay, this is how you have to speak. आपको मेन कंट्रीज अगर आप नोटिस कर दोगे, कंट्री हमारी इंडिया जो है वो साउथ में है, हमारा एशिया जो है वो नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका हमारा नॉर्थ में है, साउथ अमेरिका साउथ में है, और यूरोप हमारा मिडिल में है. ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है इन केस इफ यू गेट अ मैप एंड यू डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट. ठीक है guys, apart from that, I'm also going to share some words that you can speak related to each picture, okay, on your WhatsApp. Just a minute. कोपिला आपको मैंने शेयर, अच्छा मैं अभी शेयर कर देती हूँ आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. Okay, ma'am. These are the words that you can speak related to every picture. Sukhdeep. These are your pictures. Harshpreet. These are the words related to each picture that you can use in your description. ठीक है? Okay.
Going over to our next picture, which is a picture, normal photograph. अब normal photograph हमें इस तरीके का मिल सकती है, तो इसमें करना है. The given image is a photograph. ये photograph है which illustrates different sports activities. यहाँ पे different sports activities आपको दिखा रहे हैं. It can be clearly seen that the image has 6 main sports activities. The image not only shows running and hurdling, but also shows flying ring and gymnastics. It can be also seen that the image has running, hurdling, weightlifting, but and boxing and gymnastics in different colors like blue, pink, and white. The on the left side, अब यहाँ पे जब भी हमें photographs मिलेगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रोपोर्शन या मिनिमम प्रोपोर्शन नहीं बोलना, हमें बोला लेफ्ट साइड पे क्या है. On the left side, there are running, hurdling, and weightlifting, and on the right side, we have flying ring, gymnastics, and boxing categories. Overall, the image is quite informative about different sports activities. Okay. और picture लेते हैं. For example, this is the picture. So इस पिक्चर में अगर आपको ऑब्वियसली कुछ दिख नहीं रहा है, लोग हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके हैंड जेस्चर्स, जो भी वो कर रहे हैं, वो सब चीज आपको नोट डाउन करनी है. The given image is a photograph which illustrates people having dinner together. It can be clearly seen that the image has 4 adults and 2 children. The image not only shows people looking at each other, but also shows different food categories. It can be also seen that the image has different food items like fruits, vegetables, glass, juices, and wine. On the left side, the man is looking at the woman, and on the right side, the woman is wearing a pair of glasses. Overall, the image is quite informative about having dinner time together. Okay. This is what you have to speak from your photographs में actually content काफी ज़्यादा होता है, so just try to speak for 35 seconds. Okay, आपको extend नहीं करना है ज़्यादा photographs में, just stick with 35 seconds of content and that's it. या फिर अगर स्क्रीन में कुछ और नहीं है, आप स्क्रीन की लाइटिंग के बारे में बोल सकते हो. ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, या फिर यहाँ पे वॉर्म लाइटिंग है, या पीछे जो है एक ब्रिक वॉल बैकग्राउंड है, और बीच में क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है. The man is having food with fork, and he's wearing a watch, and they're wearing pink color uh, top, and the boy is smiling. The man has a beard, and the woman has blonde hair. ये सब चीजें आप बोल सकते हो. ठीक है? Any questions guys till here? No. Actually, हमने अभी सिर्फ describe image cover किया है in this class. We'll try to cover the rest of the tasks as well. But अभी यहीं तक करते हैं. मैंने आपको सारे description बता दिए. If you need the recording of this class also, I will share it with you, so you can maybe go through it and you can practice accordingly. Okay. Yeah. आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. Guys, any questions till here?